पिला माने समस्त को नमस्कार। आशा करूँ समस्ते भल थिबो। पुणी थर तुम मानकु मो चैनल को वेलकम। पिला माने आज हम डिस्कशन करबा तुम जो अपकमिंग एग्जाम आसुची ओएसटीटी रो टॉप 50 पेडागोजी क्वेश्चन जो क्वेश्चन गुडी तुम निहाती इंपोर्टेंट एग्जाम रे आसिला बलिया। वर्तमान पिला माने देखिबा हमें प्रथम प्रश्न कोन कहला by which method of assessment the weakness of the learner can be identified। एटी पिला माने तमरो ऑप्शन देला कंटीन्यूअस ना तमरो डायग्नोस्टिक ना तमरो समेटिव ना तमरो फॉर्मेटिव। एटी कोन हमर पिला माने करेक्ट आंसर कमेंट रे जणाओ। पिला माने ए तमरो करेक्ट आंसर हे जबो तमरो ऑप्शन नंबर बी डायग्नोस्टिक। वर्तमान पिला माने हम बुझिबा डायग्नोस्टिक टेस्ट कोन ना टू फाइंड स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर। एकदम सिंपल वर्ड रे कहले पिला माने त बुझि परिबो जते बेले शिक्षादान प्रक्रिया रे जते बेले जने छात्र बारंबार चेष्टा करिबा सते कोनोसी निर्दिष्ट विषय बुझि पारु नै किबा गोटे पिला जते बेले शिक्षा रे पछुआ रहि जाउची तार कारण खोजिया पई जते बेले हम जो टेस्ट करि खाऊ से टेस्ट होउची पिला माने तमरो डायग्नोस्टिक टेस्ट। वर्तमान तुम गोटे छोटा एग्जांपल दउची तुम माने बुझि परिबो जते बेले पिला माने जने डॉक्टर रोगी को औषध दउची ता पूर्व से कोन करती रे ना से तार टेस्ट करूची टेस्ट कला परे सेही अनुसार से मेडिसिन लिखुची। सेही टाइप रो तमर जने जते बेले शिक्षक तमरो पढेबा पूर्व कोन करंती रे ना पिलारो कोउटी लर्निंग गैप्स हो जाउची कोउटी प्रॉब्लम रहउची जानिया परे से शिक्षा दान करिथा। बर्तन पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डज नॉट डिपेंड्स ऑन तमर पिला माने ऑप्शन देला एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड ना तमरो एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड ना कांसेप्ट ऑफ द चाइल्ड ना तमरो इनक्विजिटिवनेस ऑफ द चाइल्ड। एटी कोन हमर पिला माने करेक्ट आंसर कमेंट जणाओ। पिला माने तमरो करेक्ट आंसर हे जबो जोटा तमरो ऑप्शन होची एनवायरनमेंट ऑफ चाइल्ड ता तमरो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म पे निर्भर करि न थाए। वर्तमान देखिबा हम जो ब्रीफली हम टिके डिस्कशन करतबा कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म मुख्यतः हम देखिबा ये बेसी गुरुत्व देथिले रे ना तमरो पियाजेट बेसी तमरो गुरुत्व देथिले। आउ जे देखिबा प्रथम ऑप्शन कहला तमरो कोन एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड माने कोन ना पियाजे को अनुसार शिशु निजर अनुभूति माध्यम रे शिक्षा लाभ करिथाए तेनु से कोन होइतारे ना कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर संपूर्ण भाव में निर्भर करिथाए। तापर देखिबा तमरो जो ऑप्शन देला कोटारे तमरो कांसेप्ट ऑफ द चाइल्ड। कांसेप्ट ऑफ चाइल्ड माने कोन ना शिशु मन रे थिबा धारणा जोटा पूर्व धारणा बता को हमें कोन कहिथाउ रे ना स्कीमा ऊपर नूतन निर्माण होइथाए तेनु एहा कोन होइथाए ना कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर पूरा निर्भर करिथाए। सेही बली भाव रे हमें ऑप्शन नंबर डी ता देखिबा इनक्विजिटिवनेस ऑफ द चाइल्ड। इनक्विजिटिवनेस ऑफ द चाइल्ड माने कोन ना जिज्ञासा बा कौतुक गोटे पिलार जते जिज्ञासु हेबो कोन हबरे से सेते अधिक परीक्षा निरीक्षा करी निजर ज्ञान बढ़ाइबो। पियाजे सेही पई छोट छोट पिला मानकु कोन कहितले रे लिटिल साइंटिस्ट बोली कहितले। पिला माने बतन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। पिला माने एत तमरो ऑप्शन देला ऑब्जर्वेशन ना तमरो एक्सपेरिमेंटेशन ना तमरो स्टडी ना तमरो इवैल्यूएशन। एटी कोन हमर पिला माने करेक्ट आंसर कमेंट रे जणाओ। पिला माने ए तमरो करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी जोटा इवैल्यूएशन होची कोन रे तमरो क्वालिटेटिव ता सहित क्वांटिटेटिव। वर्तमान पिला माने हमें टिके बुझिबा तमरो क्वांटिटेटिव कोन ना जते बेले हमें परीक्षा माध्यम रे शिशु को केवल मार्क किबा स्कोर देथाउ उदाहरण 100 रु हम देले 80 ता होची कोन रे तमरो क्वांटिटेटिव। किंतु जते बेले ओटे पिला भितर हमें तार व्यवहार तार कौशल मूल्यबोध मतामत देथाउ किबा हमें ताको ग्रेड देथाउ सेटा हो तमरो क्वांटिटेटिव। किंतु इवैल्यूएशन कोन रे एहा को व्यापक प्रक्रिया एटी कोन इनक्लूड करथाय रे ना तमरो क्वालिटेटिव सहित क्वांटिटेटिव को इनक्लूड करथाय। वर्तमान पिला माने हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा progressive change in quality composition and character is called growth ना तमरो डेवलपमेंट ना तमरो प्रोग्रेस ना तमरो ऑल ऑफ द एबव। एटी कोन नंबर पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने ए तमरो करेक्ट आंसर हे जो ऑप्शन नंबर बी। बतन पिला माने हम देखि दबा ग्रोथ और डेवलपमेंट ऊपर ठीक है डिस्कशन कर दबा। ग्रोथ कोन रे ना पिला माने यहा मुख्यतः तमरो
शरीर आकार किंबा ओजन हेउतबा परिवर्तन को बुझाई थाए किंतु जे देखिया पिला माने तमरो डेवलपमेंट कोन ना एहा एक प्रगतिशील आ तमरो गुणात्मक परिवर्तन तमरो गुण रे कोन कोन सब परिवर्तन होची आ को आमे कहि परिबा डेवलपमेंट एतरे कोन होइतारे रे आ तमरो शारीरिक बुद्धि सहित तमरो मानसिक आ तमरो सोशल आ तमरो आवेगिक जोटा तमरो परिवर्तन मध्ये होइता सेटा होची कोन रे हमरो डेवलपमेंट वर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी आर केतरे तमरो 15 ना तमरो 16 ना तमरो 17 ना 19 एटी कोन नंबर पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने तमरो करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा in which step difficulty value and discriminating power of the test item are determined एटी पिला माने और ऑप्शन देला ट्राई आउट ना तमरो प्लानिंग ना तमरो प्रिपेयरिंग ना तमरो ऑर्गेनाइजिंग एटी कोन नंबर पिला माने राइट आंसर कमेंट रे जणाओ पिला माने तमरो राइट आंसर हे जिवो जोटा तमरो ऑप्शन नंबर ए होती ट्राई आउट वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which method is more effective for self assessment कोन कहला रे ना तमरो निजस्व मूल्यांकन बा जोटा सेल्फ असेसमेंट पाई तेउ पद्धति अधिक प्रभावशाली रे तमरो पिला माने एटी ऑप्शन देला ऑब्जर्वेशन ना तमरो असाइनमेंट ना तमरो पोर्टफोलियो ना रुब्रिक्स एटी कोन नंबर पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने तम राइट आंसर हिजबो पोर्टफोलियो हबो ता सहित रुब्रिक्स हबो वर्तमान देखिबा हमें पोर्टफोलियो आ रुब्रिक्स कोन ना पिला माने तमरो रुब्रिक्स कोन रे एहा को मापदंड जेउतरे शिक्षार्थी निजर कार्य केउ स्तर रे अछि ता सटीक भाबरे जानि पारे एहा निजर भूल संशोधन मध्य करिवारे सहाय्य करिथाय जे देखिबा पिला माने पोर्टफोलियो से बळी जने शिक्षार्थीर दीर्घ समय रे तार कृति बा कार्यर संग्रह को हमें पोर्टफोलियो कहिताउ जहा देखि से निजर उन्नति विषय रे जानि पारे से बळी भाबरे वर्तमान हमें देखिबा तो तमरो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रे इन व्हिच टेस्ट रॉ स्कोर आर डायरेक्टली इंटरप्रेटेड रॉ स्कोर माने कोन रे पिला माने ना रॉ स्कोर माने होत तमरो मिलिथिबा मार्क कोन कहला प्रश्न तमरो केउ परीक्षा रे तमरो मिलिथिबा मार्क को हमें सीधा सड़क भाबे व्याख्या करा जाय एटी पिला माने तमरो ऑप्शन देला स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ना तमरो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ना तमरो टीचर मेड टेस्ट ना तमरो ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट एटी कोन नंबर पिला माने तमरो राइट आंसर पिला माने तमरो राइट आंसर हे जिवो टीचर मेड टेस्ट वर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिबा which principle is not associated with growth and development तमरो एटे ऑप्शन देला पिला माने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्युइटी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ना प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन तमरो कोन होबर पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने तमरो राइट आंसर हे जिवो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्युइटी तमरो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल भितरे आसु नाही वर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अकॉर्डिंग टू थर्स्टन्स अप्रोच इंटेलिजेंस कंप्राइजेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंटल एबिलिटी एटी पिला माने तमरो ऑप्शन देला 7 ना तमरो 9 ना तमरो 10 ना तमरो 12 एटी कोन नंबर पिला माने करेक्ट आंसर कमेंट रे जणाओ पिला माने एटी तमरो करेक्ट आंसर हे जिवो जोटा ऑप्शन नंबर से सातटी कोन सातटी हमरो वर्तमान हम टिके देखिबा लक्ष्य करो ना प्रथम होबो तमरो कोन रे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन देन तमरो होची कोन रे वर्ड फ्लुएंसी देन तमरो नंबर फैसिलिटी देन तमरो स्पैटियल विजुअलाइजेशन देन तमरो कोन रे परसेप्चुअल स्पीड देन होची तमरो लास्ट रे रीजनिंग वर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which is not a factor of democratic management वर्तमान तमरो ऑप्शन कोन देला रे पिला माने कोऑपरेशन हबो ना तमरो कोऑर्डिनेशन हबो ना तमरो इंटीग्रेशन ना तमरो
imposition एटी कौन नंबर पिला माने करेक्ट आंसर पिलाने तमरो करेक्ट आंसर है imposition imposition माने कौन रे ना तमरो जोर जबरदस्त लदी दबा देखिया पिला माने तमरो गणतांत्रिक परिचालना सबु बेले तमरो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन ऊपर कौन करता है रे विश्वास करता है एथिरे कहा ऊपर किछि जोर जबरदस्त लदी दिया जाय नाही जोटा तमरो imposition होई न थाए जहा कि एक कौन रे एक छत्रवादी शासन बा परिचालन ऊपर लक्षण वर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिबा इनेट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय नॉम चॉम्स्की ना एरिक्सन ना तमरो कोलबर्ग ना तमरो वाइगोत्स्की एटी कोन नंबर पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने तमरो करेक्ट आंसर है जिवो नॉम चॉम्स्की जे तमरो लैंग्वेज डेवलपमेंट ऊपर बेसी गुरुत्व देथिले वर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कमिंग अंडर द यूजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन असेसमेंट एटी कोन नंबर पिला माने करेक्ट आंसर कमेंट जणाओ पिला माने तमरो राइट आंसर है जिवो ऑप्शन नंबर सी जोटा होची इट इज यूज्ड टू ascertaining the general trend of opinion of a group वर्तमान पिला माने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिबा which is not the principle of growth growth रो कोडा कोडा प्रिंसिपल नो बोली से कहूची growth is gradual na growth is quantitative na the rate of the growth is not even na growth of follow a pattern एटी कौन नंबर पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने एतो राइट आंसर है जिवो ऑप्शन नंबर सी जोटा द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट ए इवन वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन लिखबा व्हिच वन इज द फर्स्ट फेज ऑफ लर्निंग सीक्वेंस एट तमरो पिला माने ऑप्शन दला मैच्योरेशन ना तमरो मोटिवेशन ना तमरो इंटरेक्शन ना तमरो एक्शन एटी कोन नंबर पिला माने राइट आंसर पिला माने तमरो राइट आंसर है जिवो जोटा कि तमरो ऑप्शन नंबर बी होची मोटिवेशन देखिया पिला माने ऑप्शन ए तमरो प्रश्न कोन कहला शिक्षण प्रक्रिया रे तमरो प्रथम सोपान स्तर कोडा रे तमरो मोटिवेशन मोटिवेशन कोन ना शिक्षण प्रक्रिया रे देखिया पिला माने मोटिवेशन होची कोन रे तमरो फास्ट सबुठारु कोन गुरुत्वपूर्ण स्तर काहे कि ना जदी जने शिशु कोनसे जिनिस शिखिया पई ता भितरु आग्रह जदी नथिबो आउ से जदी मोटिवेटेड न होइतिबो तबे तार जो लर्निंग ता सफल होई परिबो नाही वर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिबा नेम द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइन द मेंटल एज तमरो फर्स्ट मेंटल एज ऊपर किए डिफाइन करथिले रे तमरो पिला माने ऑप्शन दला जेपी गिलफोर्ड ना तमरो एलएल थर्स्टन ना तमरो गाग्नी ना तमरो अल्फ्रेड बाइनेट इन कोन कोन ऊपर पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने तमरो राइट आंसर है जिवो जोटा तमरो ऑप्शन डी होची राइट आंसर अल्फ्रेड बाइनेट वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिबा which one is not a tool of observation observation कोडा कोडा टूल हो बोली से कहूची तमरो रेटिंग स्केल ना तमरो चेकलिस्ट ना तमरो अचीवमेंट टेस्ट ना तमरो एनिकोडल रेकॉर्ड एडी कोन नंबर पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने तमरो राइट आंसर है जिवो जोटा तमरो अचीवमेंट टेस्ट देखिबा पिला माने तमरो रेटिंग स्केल तमरो चेकलिस्ट आ तमरो पिला माने एनिकोडल रेकॉर्ड होची कोन आ तमरो ऑब्जर्वेशन रो गुटे गुटे टूल किंतु तमरो जो अचीवमेंट टेस्ट होची तमरो
ऑब्जर्वेशन रो गुटे टूल नुह बर्तमान आमे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज नॉट एसोसिएटेड विथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कोडा गुटे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सहित एसोसिएटेड नुह आमे देखिबा तमरो ऑप्शन देला पिला माने मेमोराइजेशन ना तमरो कांसेप्ट फॉर्मेशन ना तमरो ऑब्जर्वेशन ना तमरो सोशलाइजेशन एटी पिला माने तमरो करेक्ट आंसर कोन हबरे पिला माने एक तमरो राइट आंसर हेजिबो जोटा तमरो ऑप्शन नंबर डी जोटा सोशलाइजेशन दे देखिया पिला माने तमरो कोन रे मेमोराइजेशन कांसेप्ट फॉर्मेशन आ ऑब्जर्वेशन तमरो कोन रे तमरो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सहित रिलेटेड किंतु सोशलाइजेशन ता तमरो सामाजिक प्रक्रिया सहित रिलेटेड बर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन इंडिया द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी कोन हबा दरकार ना तमरो डेमोक्रेटिक ना तमरो ऑटोक्रेटिक ना ब्यूरोक्रेटिक ना तमरो आइडियलिस्टिक एटी कोन हबरे पिला माने पिला माने एतबरो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डेमोक्रेटिक हबा दरकार काहे कि ना विद्यालय प्रशासन सब बेले गणतांत्रिक हेबा उचित जेउतरे तमरो समस्तंकर तमरो शिक्षक अभिभावक आ छात्र ताकर मतामत को गुरुत्व दिया जिवो एहा को कोन करे रे सुस्थ शिक्षण परिवेश सृष्टि करिवारे सहाय्य करिथाय वर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा according to Piaget the pre operational stage coincides with तमरो ऑप्शन दला पिला माने प्री चाइल्डहुड स्टेज ना अर्ली चाइल्डहुड स्टेज ना तमरो लेट चाइल्डहुड स्टेज ना तमरो एडोलेसेंट स्टेज एटी कोन हबरे पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने एट तमरो राइट आंसर हे जिवो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जोटा कि तमरो केते वर्ष रे ना तमरो 2 रु 7 वर्ष मध्ये होइताय वर्तमान में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंक्लूड तमरो ऑप्शन देला पिला माने फियर एंड सेम एडल्ट लाइक बिहेवियर रेस्टलेसनेस ना तमरो इमेजिनेशन एटी कोन हबरे पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने एट तमरो राइट आंसर हे जबो एडल्ट लाइक बिहेवियर वर्तमान में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच वन इज द इंटरनल कंडीशन ऑफ लर्निंग तमरो पिला माने ऑप्शन देला कॉन्टिग्युइटी ना तमरो प्रैक्टिस ना तमरो डिस्क्रिमिनेशन ना तमरो एमिटिंग बिहेवियर एटी कोन हबो पिला माने राइट आंसर कमेंट रे जणाओ पिला माने तो राइट आंसर हे जो प्रैक्टिस व्यक्ति निजे अभ्यास कले ही शिक्षण तार कोन होइते दृढ़ होइते वर्तमान हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा who are the profounder of the social constructivism तमरो भाइगोस्की ना तमरो जीन पियाजे ना तमरो नाम चॉम्स्की ना तमरो कोल्बर्ट एटी कोन नंबर पिला माने पिला माने एतम राइट आंसर हे जिवो भाइगोस्की वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which is not related with the objective of motivation पिला माने तमरो एटी ऑप्शन देला टू एनर्जी the behavior to stabilize the behavior to stimulate the behavior to activate the behavior एटी कोन हबरे पिला माने एटी कोन हबरे पिला माने तमरो राइट आंसर ना टू तमरो stabilize the behavior वर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा lecture method is generally called as learner center ना child center ना activity center ना तमरो teacher center एटी कोन हबरे पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने ए तमरो राइट आंसर हे जिवो जोटा कि तमरो ऑप्शन नंबर डी टीचर सेंटर जोटा तमरो लेक्चर मेथड सब मध्य कुआ जाय एठी तमरो टीचर बा लेक्चर होची तमरो एक्टिव रोल तमरो धारण करि थांती आ स्टूडेंट होची पैसिव थांती वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following is related to learners handwriting तमरो ऑप्शन देला पिला माने फैमिली
ନା सोसाइटी ना एनवायरनमेंट ना तमरो मैच्योरेशन एटी कोन हमर पिला माने पिला माने एतो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी मैच्योरेशन रे देखिया पिला माने सुंदर हस्ताक्षर पई पिलाटर तम जो मोटर स्किल सहित तार मैच्योरेशन मध्ये आवश्यकता रहिछि बर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ फॉलोइंग आर ओनली विजुअल एड केवल हमें देखि परिबा कोटा विजुअल एड रे तमरो ऑप्शन देला पिला माने एटी ब्लैक बोर्ड चार्ट फ्लैश कार्ड ना तमरो ब्लैक बोर्ड रेडियो टेलीविजन ना तमरो ब्लैक बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड आ रेडियो ना तमरो ब्लैक बोर्ड टेप रेकॉर्डर ना प्रोजेक्टर एटी कोन हमर पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने ए तमरो राइट आंसर हे जिवो जोटा कि तमरो ऑप्शन नंबर ए बर्तमान पिला माने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which method of evaluation is effective for both curricular and co-curricular achievement एटी कोन हमर पिला माने हमर ऑप्शन देला पिला माने एटी फॉर्मेटिव ना कॉम्प्रिहेंसिव ना डायग्नोस्टिक ना तमरो एप्टीट्यूड एटी कोन हमर पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने ए तमरो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर जोटा बी कॉम्प्रिहेंसिव जे देखियो पिला माने तमरो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जोटा तमे व्यापक मूल्यांकन कोन करे रे शिशुर केवल पाठ पढ़ा नुहे बरं तार खेलकूद कला एवं अन्य प्रतिभार मध्य मूल्यांकन करिथाय बर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा The basic purpose of school management is to help teachers improving method, teachers in understanding pupils, teachers in dealing people, na children learn more effectively. एटी कोन हमर पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने एतो राइट आंसर हे जिवो चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली बर्तमान हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिमेरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन कोटा उटे ऑब्जर्वेशन डिमेरिट बोली हमें देखिबा मोर रिलायबल मोर सर्चिंग टाइम कंज्यूमिंग ना नंबर वेरी फ्लेक्सिबल एटी कोन हमर पिला माने करेक्ट आंसर पिलाने एतो राइट आंसर हिजबो तमरो ऑप्शन सी जोटा टाइम कंज्यूमिंग ऑब्जर्वेशन करिया पई पिला माने मन रखितो तमरो बहुत टाइम टेकिंग हिताए ता सहित तमरो धैर्य शक्ति मध्ये रहिबा आवश्यक तेनु एक कोन रे समय सापेक्ष पद्धति वर्तमान हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा concept formation primarily relates to तमरो cognitive development ना cognitive development ना तमरो psychomotor development ना तमरो affective development कोन हमर पिला माने पिला माने एतो राइट आंसर हे जिवो जोटा कि तमरो ऑप्शन नंबर जोटा कोन ए जोटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जोटा तमरो हेड टू फुट इज कॉल्ड cephalocaudal tendency of development ना proximal distal tendency of development ना तमरो spiral tendency of development ना तमरो none of the above एटी कोन हमर पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने एकदम राइट आंसर हे जिवो तमरो ऑप्शन नंबर ए जोटा सेफालाकाउडाल किंतु जति देखिया पिला माने सेंटर रु पेरिफेरी हेतिले हमर एटी प्रॉक्सिमल डिस्टल हे जाइतांदा वर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मैच्योरेशन इज तमरो साइकोलॉजिकल प्रोसेस ना तमरो मेंटल प्रोसेस ना तमरो लर्निंग प्रोसेस ना तमरो बायोलॉजिकल प्रोसेस एटी कोन हमर पिला माने करेक्ट आंसर माने मन रखिबो तमरो मैच्योरेशन दा सब बेले कोन रे तमरो बायोलॉजिकल प्रोसेस सहित रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा instinct of constructiveness is associated with which type of emotion it पिला ने तमरो ऑप्शन देला distress ना feeling of creativeness ना fear ना तमरो negative
सेल्फ फिलिंग एटी कौन हम पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने एतो राइट आंसर है जो फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस जते बेले पिला माने नूतन किछि हमें हमरो निर्माण करिवार इच्छा तमर कोन करिता सृजनशील आनंद ही आसी था बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन लिखबा नंबर ऑफ टीचर्स टू बी नॉमिनेटेड टू एसएमसी इज केतरे तो राइट आंसर है जो पिला माने 1 बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन लिखबा व्हिच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज देखिबा पिला माने तमरो ऑब्जर्वेशन टेक्निक रे को टाइप रो तमरो ऑब्जेक्टिव ना तमरो सब्जेक्टिव ना तमरो डायग्नोस्टिक ना तमरो प्रिवेंटिव एटी कोन हमरे पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने तो राइट आंसर है जिवो जोटा तमरो ऑप्शन नंबर बी सब्जेक्टिव बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन लिखबा a project is a problematic act carried to completion in its natural setting who said it तमरे के कहतले रे और ऑप्शन पिला माने देला किलपैट्रिक ना तमर स्टीवेंसन ना तमर एरिक्सन तमर ना तमर स्टोनबर्ग एटी कोन हमरे पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने तमर करेक्ट आंसर है जो जोटा तमर ऑप्शन होबी स्टीवेंसन कहतले बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन लिखबा in which situation the learner constructs his or her own knowledge तमर ऑप्शन पिला माने देला टीचर सेंटर ना लर्नर सेंटर ना लर्निंग कंट्रोल ना सब्जेक्ट कंट्रोल एटी कोन हमरे पिला माने करेक्ट आंसर कमेंट रे जणाओ पिला माने एतो राइट आंसर है जिवो लर्निंग सेंटर रे कोन हेता रे ना तमरो शिक्षार्थी माने कोन हेतांती अधिक सक्रिय थांती आउ तांकर विभिन्न कार्यकलाप माध्यम रे निजर ज्ञान निजे सृष्टि करि पारि थांती बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन लिखबा व्हाट द प्रोफाउंडर ऑफ मल्टीपल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस थियरी थिले रे स्पीयरमैन ना तमरो गिलफोर्ड ना तमरो गार्डनर ना तमरो थॉमसन एडी कोन हमर पिला माने राइट आंसर पिला माने एतो राइट आंसर है जिवो तमरो हावर्ड गार्डनर होची तमरो मल्टीपल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस देखले बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन लिखबा व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रो कोडो एग्जांपल रे तमरो टीचर ना तमरो लाइब्रेरी ना तमरो क्लासरूम ना तमरो प्लेग्राउंड एडी कोन हमरे पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने एतो राइट आंसर है जिवो टीचर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन लिखबा which one is not a component of educational management रो कोनटा कंपोनेंट निहरे educational planning educational guidance educational administration educational supervision एडी कोन हमरे पिला माने करेक्ट आंसर पिला माने एतो राइट आंसर है जिवो ऑप्शन बी जोटा एजुकेशनल गाइडेंस बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन लिखबा which type of motivation is related to reward टा को टाइप रो मोटिवेशन रे पिला माने और ऑप्शन देला पिला माने एक्सट्रिंसिक ना इंट्रिंसिक ना बायोलॉजिकल ना तमरा इनवर्ड एडी कोन हमर पिला माने पिला माने तमरा राइट आंसर है जिवो जोटा तमरा एक्सट्रिंसिक देखिया पिला माने तमरा मोटिवेशन दी टाइप रो रहउची गुटे इंट्रिंसिक आ गुटे एक्सट्रिंसिक टा कोन रे तमरा जते बेले शिशु कोनोसी पुरस्कार बा मार्क बा तमरा प्रशंसा पई पढे ताको हमें कोन कहिताउ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहिताउ किंतु इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोन रे जते बेले से तार मनरु जते बेले निजस्व भावनारु से पढी थाए ता भीतर कोन होता रे सेटा को हम कहि परिबा इंट्रिंसिक मोटिवेशन वर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिबा which of the following is one of the foremost requisite of a good administration एटी पिला माने ऑप्शन देला कॉन्फिडेंस पावर कैरेक्टर ना तमरा वेल्थ ए कोन कहला रे क्वेश्चन आ जने भलो प्रशासक पय सबुटार गुरुत्वपूर्ण कोन रे कॉन्फिडेंस
ନା ପାୱାର ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନା ୱେଲ୍ଥ। ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କନଫିଡେନ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ହୁ ଇଜ ମୋର ଆକ୍ଟିଭ ଇନ କ୍ରିଟିକାଲ pedagogy? ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଦେଲା ତମର ଟିଚର ନା ଲର୍ନର ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ନା ସୋସାଇଟି। ଏଠି କଣ ହବ ରେ? ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯୋଉଠି ତମର ଲର୍ନର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ, what is the sequence of preparing a project? ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରିପାରିଂ ରେ ତା ସିକ୍ୱେନ୍ସ କଣ ରେ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅପସନ ଦେଲା choosing, planning, executing and evaluating ନା ତମର planning, choosing, executing, evaluating ନା ତମର ପିଲାମାନେ executing then evaluating then choosing then planning ନା ତମର evaluating then choosing then planning then executing। ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା କି ତମର ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, choosing, planning then executing then evaluating। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, when did multilingual education start in our state? ତମର ଅପସନ ଦେଲା ପିଲାମାନେ 2005 ରୁ 2006 ନା 2006 ରୁ 2007 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ନା 2007 ରୁ 2008 ନା 2008 ରୁ 2009। ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 2006 ରୁ 2007 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, the quality education of a school management mainly depends upon infrastructure, facility, teaching learning approach na tutorial and attractive classes na classroom and laboratories। ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ଆପ୍ରୋଚ। ଭୌତିକ ସୁବିଧା ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, pedagogy is a science of teaching ନା learning ନା acting ନା analyzing। ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ପିଲାମାନେ ତମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ teaching, pedagogy is teaching। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, which method is different for the other three in assessment point of view? field work, group work, project work ନା classroom demonstration। ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ତମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା କି ତମର ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, if IQ of a person is 150 and mental age is 30 then what is the value of chronological age? ଏଠି କଣ ହବ ରେ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତମର ଏଠି IQ ଦେଲା କେତେ ନା IQ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମର 150 ଆଉ ତମର ଏଠି ଯେ ଦେଖିବା ତମର MA ଦେଲା କେତେ 30। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ତମର IQ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ରେ? ତମର ପିଲାମାନେ IQ ର ଫର୍ମୁଲା ନା ତମର MA by CA into 100। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖି କରିଦେଇଛି ତମର ଏଠି ଦେଖ ଟିକେ ନା ତମର IQ is equal to MA by CA ଦେଲେ IQ ର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଠି ତମର ଦେଇଛି କେତେ ନା 150 ଦେଲେ 150 is equal to ତମର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 30 by ତମର CA। CA ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୋଲିବା ଯୋଉଟା ତମର chronological age into 100 ଦେଲେ କଣ ହେଇଯିବ 150 into CA is equal to ତମର କେତେରେ ତମର ଏଠି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତମର 3000 ଦେନ ହେଇଯିବ CA is equal to ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 3000 by 150 ଦେଲେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 20 ହଉଛି ତମର ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ୍ଲାସ ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ। ରହିଲି ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।